Good morning, my dear students. Welcome to conceptum classes. Today, in this session, we will discuss from question number 9 to question number 15 of exercise 3.3. This is 11th class mathematics trigonometric functions. But before discussing these questions, let me remind you, if you are the first time viewer of this channel, please don't forget to subscribe it. तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको पहले वीडियो में 24 फार्मूलाज दिखाए थे। तो वो 24 फार्मूला अगर आपको याद है तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो अगर कोई और नया फार्मूला आएगा वो हम क्वेश्चन में ही नोट करेंगे, लेकिन वो फार्मूला आप जरूर याद करिएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, प्लीज वो वीडियो आप देखना जरूर। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। तो 9th क्वेश्चन इज cos 3 pi by 2 plus x into cos 2 pi plus x into cot of 3 pi by 2 minus x plus cot of 2 pi plus x is equal to 1. You first take the left hand side. Take the left hand side. It is cos of 3 pi by 2 plus x into cos of 2 pi plus x into cot of 3 pi by 2 minus x plus cot of 2 pi plus x. Now, this is cos of 3 pi by 2 plus x. याद रखना, जब भी कभी पाई बाई 2 आएगा या इसके मल्टीपल्स आएंगे 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, तब कन्वर्शन होती है। और जब कभी भी पाई आएगा या उसके मल्टीपल्स आएंगे 2 पाई 3 पाई, तब कन्वर्शन नहीं होती है, तब ये सेम रहता है। तो cos 3 पाई बाई 2 प्लस x, ये हो गया sin x। cos 3 पाई बाई 2 प्लस x is sin x into cos of 2 pi plus x, it is cos x। यानी यहाँ कन्वर्शन नहीं हुई, यह सीधा cos x के बराबर है। यहाँ कन्वर्शन हुई या sin x की, क्योंकि यहाँ 3 पाई बाई 2 है और यहाँ सिर्फ 2 पाई है। जब 3 पाई बाई 2 होगा या पाई बाई 2 होगा तो कन्वर्शन होती है, और जब पाई होगा या 2 पाई होगा या 3 पाई होगा तब कन्वर्शन नहीं होती है। इंटू cot 3 पाई बाई 2x, तो यहाँ कन्वर्शन होगी। तो cot पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो यहाँ बनेगा tan x प्लस cot 2 पाई प्लस x, तो यहाँ 2 पाई है, कोई कन्वर्शन नहीं होगी, तो सीधा रहेगा cot x। So it is sin x into cos x tan x, sin x over cos x plus cot x is cos x by sin x। So it is equal to sin x into cos x। यहां लीजिए एलसीएम, sin x into cos x, so it will be sin square x क्रॉस मल्टीप्लाई करके plus cos square x। Now this sin x and sin x cancels, cos x and cos x cancels, it remains sin square x plus cos square x, which is equal to 1. That's equal to right hand side. Note it down. Let's move to question number 10. Now question number 10. 10th question is sin of n plus 1 into x into cos of n plus 2 into x plus cos of
n plus 1 into x into cos of n plus 2 into x is equal to cos x. Take left hand side. So it is sine of n plus 1 into x into cos of n plus 2 into x plus cos of n plus 1 into x into cos of n plus 2 into x. Let me first check it. Here it is sine. It is sine here. Now, sine of n plus 1 into x into sine of n plus 2x x plus cos of n plus 1 into x cos of n plus 2x. Now we know that we can write a plus b is also equal to b plus a. यानी मैं इस वाले पोर्शन को यहां ले आऊंगा, इस वाले पोर्शन को यहां ले जाऊंगा. अगर ऐसा नहीं भी करेंगे तो भी क्वेश्चन निकलेगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ऐसा करेंगे तो आपको फार्मूला समझने में आसानी हो जाएगी और कुछ नहीं है. तो यहां मैं इसको ऐसे लिखता हूं, cos n plus 2 इसको मैं पहले लिखता हूं, cos n plus 2 into x into cos n plus 1 into x plus sin n plus 2 into x into sin n plus 1 into x. So let me put this n plus 2 into x as a and this n plus 1 as b. तो ये मेरा a हुआ और ये मेरा b हो गया. तो ये क्या बना मुझे? Now the question is cos of n plus 2 into x, वो मैंने a के बराबर रखा, हुआ cos a into cos of n plus 1 into x, वो मैंने b के बराबर रखा, हो गया cos b plus sin a sin b, where a is equal to n plus 2 into x and b is equal to n plus 1 into x. Now cos a cos b sin a sin b, ये फार्मूला बना, किसके बराबर होता है? It is cos of a minus b. Cos a cos b plus sin a sin b, it is cos of a minus b. तो लगाइए a और b का वैल्यू ऑफ वापस, cos of a n plus 2 into x minus b n plus 1 into x. So it is cos of n into x nx plus 2x minus n into x nx plus minus minus x. Minus nx and plus nx cancels. Is cos of 2x minus x, which is equal to cos x. That's equal to right hand side. Note it down. Let's move to question number 11. Question 11. The question 11 says cos of 3 pi by 4 plus x minus cos of 3 pi by 4 minus x is equal to minus root 2 sin x. Again, take the left hand side. It is cos of 3 pi by 4 plus x minus cos of 3 pi by 4 minus x. Let me put 3 pi by 4x as c and
3 pi by 4 minus x as d। तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा मुझे, ये बनेगा cos c minus cos d, where c is equal to 3 pi by 4 plus x and d is equal to 3 pi by 4 minus x। now cos c minus cos d किसके बराबर होता है, फॉर्मूला मैंने लिखाया हुआ है पहले ही, cos c minus cos d it is minus twice sin c plus d by 2 into sin of c minus d by 2, twice sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2। तो लगाइए minus twice sin c 3 pi by x 3 pi by 4 plus x plus d 3 pi by 4 minus x whole divided by 2 into sin of c 3 pi by 4 plus x minus d 3 pi by 4 minus x whole divided by 2। So it is minus twice sine, here plus x and minus x cancels, 3 pi by 4 3 pi by 4 means 6 pi by 4 over 2 into sine of, here plus 3 pi by 4 minus 3 pi by 4 cancels, it is x minus minus plus x is sine of 2x by 2। So let me do it here now। अब इसको कर लेगा, this is minus twice sine 6 pi by 4 into इस 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 by 2 into sine of, here 2 and 2 cancel, it's x, now 2 ones are 2 threes are, it is minus twice sine 3 pi by 4 into sine of x, it's minus twice sine 3 pi by 4, इसको मैं पाई की टर्म्स में लाऊंगा, इसको मैं लिखूंगा पाई माइनस पाई बाई 4, pi minus pi by 4, 4 into pi is 4 pi, 4 pi minus pi is 3 pi by 4 into sine of x, this is minus twice sine pi minus pi by 4 is sine of pi by 4 into sine of x, this is minus twice sine pi by 4, sine pi by 4 means sine 45 degree into sine of x, minus twice sine 45 is 1 by root 2 into sine of x minus root 2, इसको मैं लिखूंगा root 2 into root 2 over root 2 into sine of x, root 2 and root 2 cancels, minus root 2 sine x, that's equal to right hand side। Note it down, let's move to question number 12। Now question number 12, 12th question is sine square 6x minus sine square 4x is equal to sine 2x into sine of 10x। Here again, you take the left hand side, is sine square 6x minus sine square 4x,
Sine square 6x. Let me put 6x as A and 4x as B. It is sine square A minus sine square B, where A is equal to 6x and B is equal to 4x. Now sine square A minus sine square B. The formula है हमारे पास sine square A minus sine square B. It is sine of A plus B into sine of A minus B. Sine square A minus sine square B. It is sine of A plus B into sine of A minus B. Note it down. Formula याद रखना. Sine square A minus sine square B is sine of A plus B into sine of A minus B. It is sine of A. What is A? 6x plus 4x into sine of 6x minus 4x. This is sine of 10x into sine of 6 minus 4 is 2x. Or I can write it as sine 2x into sine 10x. That's equal to right hand side. Note it down. Let's move to question number 13. Now question 13. It is cos square 2x minus cos square 6x is equal to sine 4x sine 8x. We take the left hand side. Cos square 2x minus cos square 6x. अब इस cos को मैं sin में कन्वर्ट करता हूं. Cos square x फॉर्मूला है मेरे पास. Cos square theta is 1 minus sin square theta. ये फॉर्मूला मैं यहां यूज करूंगा. Cos square 2x is 1 minus sin square 2x minus cos square 6x 1 minus sin square 6x. So it is 1 minus sin square 2x minus 1 minus plus sin square 6x. Plus 1 and minus 1 cancels. So it is sin square 6x minus sin square 2x. Keep the sin x as 6x as A and 2x as B. So it will be sin square A minus sin square B, where the A जो मेरे पास है वो 6x है और B जो मेरे पास है 2x है. तो sin square A minus sin square B. अभी क्वेश्चन नंबर 12 में आपने फॉर्मूला देखा किसके बराबर होता है. ये होता है sin of A plus B into sin of A minus B. अब A और B को वैल्यू लगाइए अपना वापस. It is sin of A 6x plus 2x into sin of A minus B 6x minus 2x. So it is sin of 6x plus 2x 8x into sin of 6x minus 2x is 4x. Or I can write it like this: sin of 4x into sin of 8x. That is equal to right hand side. Note it down. Let's move to question number 14. 14th question now. Question number 14. 14th question is sin of 2x plus sin twice sin 4x plus sin of 6x is equal to
4 cos square x into sin 4x. Take the left hand side. The sine of 2x plus twice sine 4x plus sine of 6x. Let me regroup this. इसको मैं regroup करूंगा. Let me write it like this. Sine of 6x plus sine of 2x plus twice sine 4x. Let me keep the 6x as c and 2x as d. The question becomes sine c plus sine d plus twice sine 4x. साइन सी प्लस साइन डी किसके बराबर होता है? ये होता है ट्वाइस साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2. तो ये फार्मूला हुआ प्लस ट्वाइस साइन 4x. इट इज ट्वाइस साइन. अब a मेरे पास है, c मेरे पास है 6x प्लस 2x, d मेरे पास 2x है ओवर 2 इंटू कॉस c मेरे पास है 6x माइनस d मेरे पास है 2x ओवर 2 plus twice sine 4x. This is twice sine 6x plus 2x is 8x by 2 into cos of 6x minus 2x is 4x by 2 plus twice sine 4x. अब यहां करता हूं इसको मैं. अब देखिए this twice sine 8x by 2, 2 ones are 2 fours, it is 4x into cos of 2 ones are 2 twos, cos of 2x plus twice sine 4x. अब यहां देखिए ट्वाइस साइन 4x, ट्वाइस साइन 4x, इसको कॉमन निकालते हैं. इट इज ट्वाइस साइन 4x. अब यहां क्या बचा? यहां बचा cos ऑफ 2x प्लस 1. नाउ दिस cos 2x मेरे पास फार्मूला है cos 2 थीटा इज ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. cos 2 थीटा इज ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. ये फार्मूला मैं यहां लगा दूंगा. इट इज ट्वाइस साइन 4x sin 2x means twice cos square x means twice cos square x minus 1. तो ये प्लस 1 इसको साथ है आपने plus 1. Now minus 1 and plus 1 cancels. So it is 2 twos are 4 cos square x into sin 4x which is equal to right hand side. Note it down. Let's move to question number 15. Fifteenth question. 15th question is cos of 4x which is cot 4x into sin 5x plus sin 3x.
is equal to cot x into sin 5x minus sin 3x. Now take the left hand side. It is cot 4x into sin 5x plus sin 3x. Let me keep this 5x as c and 3x as d. 5x को मैं c मानता हूँ, 3x को मैं d मानता हूँ. क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा cot of 4x, अंदर बचेगा sin of, क्योंकि 5x को मैंने c रखा तो ये sin c प्लस sin 3x हो गया sin d. Now sin c plus sin d, it is cot of 4x. Sin c plus sin d किसके बराबर होता है? It is twice sin c plus d by 2 into cos of c minus d by 2. अब c है मेरे पास 5x, d मेरे पास 3x, तो वैल्यू यहां लगा दीजिए. It is cot of 4x into twice sin c 5x plus d 3x by 2 into cos of 5x minus 3x by 2. It is cot of 4x into twice sin 5x plus 3x, 8x by 2 into cos of 5x minus 3x, 2x by 2. It is 2 ones, 2 fours, 2 and 2 cancels. Now it is cot of 4x. Let me write it as cos of 4x over sin of 4x into twice sin 4x into cos x. Sin 4x and sin 4x cancels. अब इसको मैं यहां करता हूं तो ये हो गया cos of 4x into twice cos x. इसको मैं ऐसे लिखता हूं cos x into twice cos 4x into twice yes cos 4x. Now multiply and dividing numerator and denominator, or multiplying and